Are taxes eroding your wealth? Here's how to protect it. Hi, friends, and welcome to this podcast by Angel Broking. If you've already started on your path to earning money in your adult life, तो आपने टैक्सेस के मुद्दे पर जरूर कुछ थॉट तो दिया ही होगा, है कि नहीं? जब नोविस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अर्न करना शुरू करते हैं तो दे रियलाइज कि टैक्स प्लानिंग वेल्थ बिल्डिंग का उतना ही क्रूशियल कंपोनेंट है जितना मनी अर्न करना. इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो टैक्सेस बिकम द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड सेविंग इट टू बिल्ड वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म. एक्चुअली वेल्थ बिल्ड करने में आपको लॉन्ग टर्म फोकस रखना बहुत जरूरी है एंड टैक्स प्लानिंग इज एसेंशियली अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग. When people trading in the stock market start making positive earnings, तो उनकी earnings become subject to what is known as capital gains tax under a tax regime. कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड? लेट्स चेक आउट दिस स्टोरी और रादर अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जिया एंड शरद टू मेक थिंग्स सिंपल. जिया ने रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था एंड जिया एक्चुअली इक्विटी और फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है. शी वाज अप्रोचिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ अ फाइनेंशियल जर्नी. वैसे तो जिया मेड सम हैंडसम अर्निंग्स ऑन हर ट्रेड्स, उसको टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर्स और रूल्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था. लॉकडाउन के स्टार्ट होने के बाद से शी स्टार्टेड लिविंग विद हर पेरेंट्स और उसको मार्केट से जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग्स हुए उसको जिया ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. दैट्स राइट, बियॉन्ड हर कैपिटल अमाउंट जिया इन्वेस्टेड all of her extra earnings into mutual funds. When the time came to file her tax returns, she decided to take some good guidance from a friend Sharad who had been trading and investing since the last 5 years. Before going to file her taxes, Zia ने mutual funds से अपने investments divest करके एक IPO के shares खरीदने में उसे use कर लिया. When Sharad got to know about this, he told Zia कि this move was not a very good idea. Do you know why Sharad didn't think of this as a good idea? Short or long-term capital gains can be a tricky slope to navigate for novice investors. फिर शरद ने जिया को एक्सप्लेन करना शुरू किया. In the meanwhile, let's explore some nuances of tax levied on capital gains. जब आप recognized brokers के थ्रू buy और sell orders place करते हो तो your transactions also entail what is called the securities transaction tax या फिर STT. अगर आपके ट्रांजैक्शंस के दौरान एसटीटी ऑलरेडी डेबिट हो गया है तो योर सिक्योरिटीज फॉल अंडर एसटीटी पेड होल्डिंग्स. हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. अगर आप इन सिक्योरिटीज को 1 साल से कम के पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो योर कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एट 15%. साउंड्स लाइक अ हेफ्टी अमाउंट, राइट? On the other hand, if you hold your STT paid securities for longer than a year and up to 3 years, your capital gains are exempted from tax as per Section 10 of the Income Tax Act. However, under the scheme, your long-term capital gains are exempt from tax only if your extra earnings are less than 1 lakhs. तो ये था रीजन वाई शरद टोल्ड जिया कि उसको म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखना चाहिए था. दिस इज जस्ट वन ऑफ द अदर वेज ऑफ सेविंग टैक्स ऑन योर कैपिटल गेन्स. Take another example. Do you know what ELSS mutual funds are? ELSS actually stands for Equity Linked Saving Schemes. These are not only good investment vehicles on their own, but also a good way to save some of your hard-earned money from being taxed at a heavy rate. ELSS में you can invest up to 1.5 lakh rupees and these funds will be exempt from tax under the Section 80C of the Income Tax Act. Sounds quite insightful, doesn't it? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स केवल इक्विटी पर अप्लाई नहीं होते. इनफैक्ट अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है इन द होप्स ऑफ मेकिंग मनी बाय सेलिंग इट, स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो द एक्स्ट्रा अर्निंग्स यू अर्न इन दिस प्रोसेस विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को 2 साल होल्ड करके सेल कर देते हो तो आपको इन एक्स्ट्रा अर्निंग्स को या फिर कैपिटल गेन्स पर 20.8% टैक्स पे करना पड़ता है. अगर आप इस प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर ही सेल कर देते हो तो द एक्स्ट्रा अर्निंग्स ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. इस केस में यू कैनॉट सेव द टैक्स ऑन योर गेन्स. लेकिन इन द प्रीवियस केस, इफ यू होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 2 years एंड देन सेल इट, तो यू कैन सेव टैक्स ऑन योर गेन्स बाय बाइंग अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन द नेक्स्ट 2 years. इंटरेस्टिंग, राइट? दोस्तों, टैक्सेस सेव करने के कई तरीके होते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई गुड टैक्स प्लानिंग वाया टैक्स सेविंग स्कीम्स कैन हेल्प यू प्रिजर्व योर अर्निंग्स एंड बिल्ड वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म.
जिया के केस में the IPO investment paid off well and offset her capital gains tax amount. If you haven't started doing your tax planning, now is always the right time to start paying attention. If you want to know more ways of saving taxes on your earnings, check out our other podcasts or visit www.angelbroking.com to learn more. We will meet again on another topic. Until then, goodbye from Angel Broking, and we wish you good luck in building your wealth.